Now, as per the government briefing on coronavirus today, total COVID-19 cases in the country have mounted to 15,712, while death toll stands at 507 in India. The Health Ministry has also informed that there are 2,144 dedicated COVID facilities across the country. Here are some of the other important key takeaways from the briefing today. Listen in. अब तक 2,231 people they have been cured, and which takes our percentage of people who are cured is to 14.19%. कल से टोटल अब तक 1,334 केसेस नए आए हैं और टोटल कंफर्म केसेस की संख्या 15,712 है। माहे इन पुडुचेरी और कोडा कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स, यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इंपोज कर सकती हैं। While that's the Health Ministry's briefing, what is the situation on ground? For the special telecast in this bulletin, I'm going across to Mumbai because India Today's Sahil Joshi is going to get us all the corona updates from Maharashtra. Sahil, over to you. Well, thanks, Pooja. As directed by the centre, we were hearing Love Agarwal as directed by the centre. Now, many states have started relaxing the guidelines of the lockdown in the state. In fact, even in Maharashtra, today the Chief Minister Uddhav Thackeray announced that the green zones and the orange zones will have the industrial activities. Now, the green zones are basically those zones, those districts where there are no coronavirus cases, whereas the orange zones are those districts where the government has managed to contain the whole spread of coronavirus. These are the districts where the restrictions will be relaxed and the industrial activities will begin. Although, as mentioned by you earlier, the Delhi is the only state where these activities will not begin. Let's first listen into what Uddhav Thackeray informed the state today. उद्यापासून परत एकदा गणपती बाप्पा मोरया करून काही ठिकाणी आपण याला मोजक्या आणि माफक स्वरूपात परवानगी देत आहोत। तर या खास करून ग्रीन झोनमध्ये आणि ऑरेंज झोनमध्ये आपण माफक स्वरूपामध्ये उद्योगधंद्यांना परवानगी देतो आहोत। याबद्दल सूचना या तळागाळापर्यंत गेलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये साहजिकच आहे शेती आणि कृषी याच्यात पहिले बंधन नव्हतं, आताही नाही, राहणार नाही। जीवनावश्यक वस्तू, त्यांचा पुरवठा, त्यांचं उत्पादन याच्यात कुठेही एक रुकावट येणार नाही। की जिल्ह्याच्या विषयी आपण उघडत नाही आहोत, अजिबात नाही। या जिल्ह्यातून त्या जिल्ह्यात जायला अजूनही परवानगी दिलेली नाही, फक्त माल वाहतूक होत राहील, पण आपण तर घरातच राहायचंय। So the Mumbai and Pune continues to be in red zone, so obviously these activities will not begin in these two main towns in Maharashtra, important towns in Maharashtra. On the other hand, some more districts will be open for the industrial activities. Of course, the industries will have to follow the social distancing norms and they will have to look at how they are going to gather the workforce which is right now in the lockdown somewhere. But on the other hand, the Chief Minister has also once again have appealed to the migrant workers because these migrant workers actually constitute of most of the working force in these industrial areas, and I've told them that they have nothing to worry, they have nothing to get scared of. If they want to return back to their states, it will happen once the lockdown is lifted, but till then it's a responsibility of the Maharashtra state to look after them. Let's listen in. केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल कर आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है
तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.